The session will begin at 5:10. Women in STEM by Habib University. The guest speakers are Fariha, Farooq, Anumtah, Aijaz, Areeba, Aziz, Rajput, Swaleha, M. Saleem, Dr. Haleema, Qamar, Binish, Fatima, Basathia. And the moderator is Dr. Sameena, Shah, Zaman. Hello, Assalamu alaikum and Adab. Welcome to the session Women in STEM. I hope you're having a wonderful time here. For this session, we'll go bilingual, Urdu and English both. Before we start our session, I would like to introduce you briefly to Habib University. आप में से बहुत सारे लोग हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे, मगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हबीब यूनिवर्सिटी एक लिबरल आर्ट्स इदारा है जहाँ स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एक मुनफरद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें साइंस और आर्ट्स के तमाम कोर्सों की गहराई से समझने के साथ साथ उन्हें एक ज़िम्मेदार शहरी बनने की तरफ भी तरगीब दी जाती है। इसके साथ साथ हबीब यूनिवर्सिटी ख़वातीन की तालीम और उनके रोल की अहमियत को बखूबी समझता है और हर मुमकिन तरीके से उनकी नुमाइंदगी को उजागर करने की कोशिश करता है, बिलखुसूस स्टेम फील्ड्स में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम समीना शाह जमान है और मैं हबीब यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हूँ और आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए हैं जो कि विमेन इन स्टेम इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से है। इसमें हमारे साथ स्टेम से मुंसलिक कुछ काबिल ख़वातीन को हमने यहाँ दावत दी है और वो आपसे स्टेम के हवाले से गुफ्तगू करेंगी और हम उनसे उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगियों में हबीब यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा है उसकी अहमियत को उजागर करेंगे और फिर हम आपसे आपके लिए आपके सवालों के लिए फ्लोर को ओपन कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इन सब के नाम और उनके उहदों के बारे में वो हमें बताएंगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum. I'm Areeba Aziz Rajput and I did my bachelor's in electrical engineering from Habib University back in 2018. Then I worked at K Electric for 2 years, after which I went on for my master's again in electrical engineering from Northeastern University on Fulbright scholarship. After which now currently I'm teaching at Habib University to electrical engineering students. Thank you, Areeba. Assalamu alaikum everyone. My name is Swaleha Saleem and I am also a Habib University graduate in the field of Bachelor's in Computer Science. I graduated just this year, but I've been working full-time at one of the top fintech startups of the country named SadaPay as a product manager. And I hope to hear from you guys today. Thank you. Great. Thank you, Swaleha. Assalamualaikum everyone. My name is Anumtah Aijaz and I am a graduate from Habib University as well in 2020 in electrical engineering. After graduating from Habib University, I was working in Toyota. Most of you know this as Indus Motor Company. I worked there for 1.5 years and then I got the opportunity to travel abroad in Egypt. I was working there as well and then I came back and I'm working at P&G. Most of you might know us as Procter & Gamble. It's a multinational company and I'm working there as a project manager and a cost systems manager, capital systems management. Thank you. Thank you, Anumtah. Assalamu alaikum everybody. My name is Fariha Farooq. I graduated from Habib University in 2019 as an electrical engineer. As soon as I graduated, I joined House of Habib as a management trainee, worked there for 1 year, wanted to get some startup experience, joined one of the leading startups in Pakistan right now, Bazaar Technologies. Right now, I'm a senior product manager leading the entire fintech domain at Bazaar. Assalamu alaikum everybody. I am Binish Fatima Basathia. I am an electrical engineering graduate from 2022. So I graduated only this year. And after graduating, I'm working in a computer science domain that is test automation development at Astera Software.
Assalamu alaikum everyone. My name is Haleema Qamar. I have done my PhD in electrical engineering from Arizona State University, again on Fulbright scholarship. I am working as an assistant professor in Department of Electrical Engineering at Habib University. Thank you. Thank you very much panelists. बहुत diverse आपके fields हैं और बहुत diverse आपका experience है. We would like to know can you share your journey with us, that what choices led your way to where you are now? So we would start with Arisha. So why I chose engineering, I guess I was good at math and physics. Honestly, when I started my bachelor's, I didn't really know what engineering primarily entails. It was during my undergrad when we were given certain projects and I had to make something from the scratch that I realized, oh, this is what engineering is all about. Having said that, then I enjoyed what I did. I enjoyed creating stuff, both from the aspect of software and hardware. It was definitely challenging, and because I enjoyed the challenge so much, I guess I pursued it further for my master's as well. Brilliant. So, Swaleha? Yes, I think my story of continuing with STEM is a bit unusual than many people, and it's because that up until high school, I never thought that I'm gonna pursue my career in the field of computer science. I did my high school, my intermediate in the field of pre-medical actually. And when I was done, I just could not really figure out what exactly do I wanna continue my career with. So I decided to take a gap year to just understand my interests. And it was when I did an internship at an e-commerce company where I got some exposure to IT and computer sciences. And then I realized that all through my life, I was just a victim of this sort of gatekeeping that women usually face in terms of STEM fields. So up until that time, I used to feel like that just because I'm a woman, I am inherently, I will be bad at mathematics or I'll be bad at coding. So that's why I never really thought about exploring fields like STEM. But it wasn't until my gap year and the internship I did, I realized that, okay, this is something that I was gatekeeped my whole life. And when I actually experienced it, I actually liked doing it. But since I did my intermediate in the field of pre-medical, I wasn't really eligible for getting admission in a computer science program at any university unless I give mathematics exam. So I self-learned, I took mathematics exams as an additional subject to my intermediate, and then I joined Habib University in their computer science program. So I think if we talk about how and why I joined computer science, I would say that it was just a matter of being gatekept my whole life, having that sort of realization just a few months before university admissions, and now I'm here in front of you guys. Brilliant. Okay, so over to Anumtah. Thank you. I think I'm going to switch to my native language if everyone's okay with that. Yes. तो जब मैं बहुत छोटी सी होती थी तो मैं जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती थी आई यूज़ टू प्ले अराउंड विद दैट, मैं सब खेल रही होती थी. एंड आई रिमेंबर दिस वन टाइम, एक टीवी होता था बहुत पहले, हम जब छोटे होते थे बहुत बड़े बड़े टीवी आते होते थे. तो मैंने इतना बड़ा कोई टीवी खुद से खोला है और मैंने उसको ठीक किया है उसको मैंने, और वो 2 दिन चला है लेकिन वो ठीक हो गया था 2 दिन के लिए. सो इट्स लाइक इट्स नॉट अबाउट कि आपको किस चीज़ के लिए आपको लोग प्रेशराइज करते हैं. इट्स अबाउट जस्ट फॉलोइंग योर हार्ट. अपने मतलब अब देखो आपको क्या करना है और वो करो, उसको बस फॉलो करो एंड बी पैशनेट अबाउट इट. जस्ट जो दिल है ना वो करो एंड पीपल विल सपोर्ट यू थ्रू आउट बिकॉज, और फेथ रखो, यकीन रखो, एंड दैट्स ऑल यू नीड. यही आपको चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए होता. इतना हार्ड वर्क सब कुछ वो सब अगर आपका शौक होगा ना तो आपका हार्ड वर्क वगैरह सब कुछ हो जाएगा आपके लिए. So yeah, that's all, and that was my journey. This is how I went about it, and I think I'm really proud to where I am, and I hope that I will continue my interest. अपना शौक मैं आगे तक लेके जाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ in the end, if not my own. Thank you. Okay, that's great. Okay, so over to Fariha. आपके पास क्या है? सो यूजुअली अम्मा अब्बा जब होते हैं तो वो बोलते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा. आई थिंक आई ओ माई जर्नी इन इंजीनियरिंग टू माई मदर बिकॉज माई मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से मेरी ये बेटी इंजीनियर बनेगी. आपकी अम्मा को कहती है अम्मा लोग अपने बेटों के लिए ख्वाब देखते हैं, आपको क्या मतलब क्या सूझिए मेरे लिए ख्वाब देख के बैठ गई हैं. बट माई मॉम वाज ऑल्सो से कि मुझे ना तुम में कुछ दिखता है तो मुझे पता है कि मेरी ये बेटी ना इंजीनियर बन सकती है.
और इवन दो वो मेरी बड़ी बहन को बहुत ऑफेंड करता था, बट रिगार्डलेस तो उसके आई थिंक वो शुरू से जब मामा ने उस चीज़ की अवेयरनेस इतनी दी हुई थी, तो बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो पता था कि अगर बायो नहीं पढ़नी तो शायद कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं पढ़ना तो आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी. Decided to pursue pre-engineering in my intermediate, and then I wanted to do engineering, but मुझे ये भी पता था कि अगर मैं engineering कर लूँगी तो कहीं ये ना हो कि मेरा दिमाग बस वो मैथ के formulas और उन सारी चीज़ों में होके रह जाए. And that is when Habib came in. I remember when I came to Habib, it was just this feeling where, you know, जब आपको पता होता है ना you belong somewhere, you get that feeling from inside, and that was Habib was for me. And when I got to know कि अच्छा सही है, there's liberal core with your electrical engineering, so I knew that this is the sort of, you know, combination that I've been looking for, and that's how I entered the field of engineering basically. Brilliant, thank you. Binish. Right, so for me, I think कि बचपन से मेरी maths और sciences like were very good. I ended up always getting very good marks in both these subjects. But एक time आया when I was in 8th 9th grade, और उस वक्त रमज़ानों में छुट्टियाँ आना शुरू हुई, तो like we would not sleep before सहरी, and हम सब सोचते थे कि हम क्या करें. And that's when I came across a Khan Academy course of coding, and that was the first time I started to code. And I think कि मुझे कोडिंग इतनी अच्छी लगी, बस मैंने 9th 10th में जाके डिसाइड कर लिया था कि मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करने वाली हूँ. एंड इन ए लेवल्स आई वाज लाइक हाँ मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करने वाली हूँ. एंड देन आई केम टू हबीब यूनिवर्सिटी. उस वक्त आई डोंट नो वाई, बट इन हबीब यूनिवर्सिटी वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ नॉट डिक्लेयरिंग योर मेजर अंटिल द एंड ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर. तो इवन दो मैं साइंस और इंजीनियरिंग ही कर रही थी वहाँ पे, लेकिन मैंने बोला कि अभी आई एम नॉट डिक्लेयरिंग माई मेजर, आई एम अनडिसाइडेड. So I was undecided between computer science and electrical engineering. और first semester में we had a course which was Introduction to Electrical Engineering, and it was such a brilliant course I'd say. उसमें हमें electrical engineering के flavors से introduce करवाया गया, and I think that was the turning point for me. Even before that semester ended, after a few मतलब कुछ classes के बाद उस course की I was like ठीक है, I don't know about computer science, मैं electrical engineering कर रही हूँ. And I think I did not end my computer science journey. I did a computer science minor. And as Fariha mentioned कि Habib University did not just make me an engineer. It made me, I don't know, it made me a very holistic human being. क्योंकि मैंने सिर्फ engineering नहीं पढ़ी, मैंने वहाँ पे some sort of humanities भी पढ़ी, management भी पढ़ी, बहुत सारी computer science भी पढ़ी. I'm doing a computer science job now. But it was like a very holistic journey. Maths भी पढ़ी मैंने. So yeah. Okay, that's very impressive. Okay, so over to Haleema. Ji. Okay. So I come from a very small town in Punjab, and when I was growing up, I was fortunate enough to have a role model at my own place, at my own home. My father, he was a chemical engineer. He is a chemical engineer, and he has PhD himself. So the good thing was I did not have to look very far to find a role model. The role model was at home. But the problem was, if you are a woman or a girl in Pakistan and you happen to be good at studies, there is only one field that would await you in general, right? So the general perception is, if the girl is, you know, brilliant in studies, she has to take medical. So on my behalf, this fight was fought by my father. He stepped up his game. He said, no, I would let her do whatever she wants to do. And I owe all my success to my father in that aspect, and my husband too. But at that time, he was the one who played the major role. He said, oh, no matter what you do, I am with you. So I ended up taking electrical engineering. But the only thing that I think as of now, that my knowledge was very limited. I only applied to 2 universities. Internet was very limited in that place. I applied to 2 universities, got into both of them, took up the public sector university because scholarships were not as much as we have in Habib University. We will talk about those opportunities later on, but I want all the girls and parents of the girls here to support their daughters, and don't be confused that if a university is private, you can't send your daughters there. There are bundle of scholarships available, and at Habib University also we'll talk about that. Thank you very much, Haleema. Thank you very much. So Habib University के जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटी से जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यू अप्लाई अप फ्रंट इंजीनियरिंग में कर दिया, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने कर दिया, आपने इलेक्ट्रिकल में कर दिया. लेकिन हबीब यूनिवर्सिटी में आपके पास पहले साल में ये गुंजाइश होती है कि आप
डिफरेंट कोर्सेज से गो थ्रू करें और उसके बाद आप अपने मेजर को डिसाइड करें लेटर ऑन। और उसके साथ साथ ना सिर्फ आप अपने आप को साइंस सेंट्रिक कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराएं, उसके अलावा आप फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, लिटरेचर से भी अपने आप को रोशनास करा सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक इंजीनियर या एक फील्ड का मेजर नहीं बनना है, आपने एक अच्छा इंसान बनना है जिसको ये भी पता हो कि उसके जो प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहा है उसकी क्या अहमियत है उस सोसाइटी में, उसको उसे कैसे इम्प्रोवाइज़ करना है। ये सारी नॉलेज हबीब यूनिवर्सिटी में दी जाती है। जब लड़कियां किसी भी फील्ड में जो कि उनके लिए नहीं डेजिग्नेट की जाती उसमें आने की कोशिश करती हैं, उन्हें बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें से कुछ के बारे में थोड़ा बहुत अभी हमने सुना है। अब इस सफ़र में जो इन्होंने मुश्किलात फ़ेस की और उन मुश्किलात को किस तरह इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में बदला, हम इसके बारे में अपने पैनलिस्ट से और सुनते हैं। सबसे पहले आपसे अरीशा, आप बताइए आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से मुश्किलात रहे और कैसे आपने उनको ओवरकम किया। I'll be honest, when it comes to home or family, alhamdulillah I have a very good support system. जो जिस तरह से डॉक्टर हलीमा बात कर रही हैं उसी तरह, like my mom wanted to pursue the field of engineering and she had to face those मसले जो she had to do it. Because she went through all of this, she was a very good support system for me. तो घर पे, and then coming to Habib as well, कभी feel नहीं हुआ अच्छा I'm a girl so I'm doing engineering, this is something new or something different जो नहीं होता है normally, because at Habib I never felt that there was any kind of discrimination or any kind of I mean we were treated as any other male student was treated. Yes, but having said that, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने कभी ये जुमला नहीं सुना इंडस्ट्री में जाके कि अच्छा ये लड़की नहीं कर सकती, ये तो लड़कियों का काम नहीं है, हमें तो खंबे पे चढ़ना पड़ेगा। आई मीन हमारी ड्यूरिंग अंडरग्रेड वी हैड टू गो टू डिफरेंट companies to do, I mean as a field trip or something, and that was the first time when we were given this impression अच्छा इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो आगे क्या करोगे, हम तो नहीं देते लड़कियों को जॉब, and we did hear this question and we were the first batch from Habib. Then even during my when I went on for work, there was this thing, but the thing is I don't take it as an obstacle, I take it as a challenge, as an invitation honestly, कि अच्छा नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं कर सकते तो अब तो करके दिखाना है. So for me I won't term it as an obstacle, I rather take it as a challenge. Okay, that's great, that's a very optimistic approach. Swaleha, आप बताइए. Yes, so to be honest, if I say I was very privileged in terms of where I was studying, that was Habib, where I did not really feel any sort of discrimination like Areeba mentioned. There was no discrimination between female students or male students. But if I talk about obstacles, most of them were internal obstacles for me. Because when I used to see computer science prodigies around me, guys who have started coding since they were 10 years old, and they were so good at computer science even in their first semester where I was just a beginner. So I thought that I can never top them or I can never be the best in this field. So there were a lot of internal obstacles. I used to feel shame in terms of admitting that, okay, there is something that I do not know. I used to feel a bit like an imposter, that I don't deserve to be where I am because I do not have that sort of past experience that a lot of my male colleagues did. And then there were a lot of external factors as well that used to strengthen my inner insecurities. So for example, mansplaining. So even if I try so hard to start speaking something and then I get cut down by another man, or I get to, or there's another obstacle that is called repeating, where you talk about some idea and nobody listens to it. Some male colleague talks about the same idea and people are clapping for them. So I think that how I coped with those challenges was that I looked inside and saw what are the qualities that are unique to me and what are the things that I am good at. So I realized that sure, I am good at technical understanding, but I am also very good at putting those technical understanding to practical use. So how can I use my technical knowledge and make a difference in real world instead of just sitting in my basement and coding all day? So that's why, as I said before, I'm working as a product manager, which is sort of an interdisciplinary field between business and technology, where I talk with engineers all day, but I also talk to business stakeholders all day.
and I make sure that whatever technology is being implemented has a real life impact. So this was a turning point for me when I realized my own inner strengths, and I started to multiply on that instead of just going with the flow and trying to be good at something that was inherently my insecurity to go about. So that's why I think that Habib also had a great play in this, because I think that if I were at some other university, there would have been only one definition of success, which was to be a good coder if you're a computer science student. But while I was at Habib, the interdisciplinary curriculum that we have made me choose the interdisciplinary field that I'm working in right now. So I wasn't just appreciated for being a good coder, I was appreciated for being a good communicator, I was appreciated from being a good negotiator. So, and I was made aware of how the world operates in terms of politically, in terms of historically, sociologically, economically, and that I think really helped me excel in my interdisciplinary role as a product manager right now. So I think that being a woman in STEM, you have obstacles all around you, but if you just look inside and be aware of what are your strengths and weaknesses and then multiply on them, then this is your way forward to just be the best at what you are. Okay, great. Thank you. Okay, Anumtah. I'd like to add on two things. So first, as Dr. Sameena mentioned, that Habib University में सिर्फ आपको इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती, उसमें आपको और लिबरल आर्ट्स भी सिखाया जाता है. तो जब आप कोई भी एंड आई से दिस बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ इन द कंपनी, तो जब आप कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे पूछते हैं वाई यू, सही है, मतलब आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, राइट. तो being a graduate from Habib University, I had that opportunity to say कि I'm not just an engineer. मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं की है, मैंने और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है. मुझे बात करनी आती है, मुझे सही से लिखना आता है, मुझे लोगों से पब्लिक स्पीकिंग आती है, मुझे सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने हबीब यूनिवर्सिटी से ही सीखी हैं. तो अगर यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स हैं या यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे देख रहे हैं टू परसू, तो आई वुड रियली रियली रिकमेंड हबीब यूनिवर्सिटी. बिकॉज मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बिकॉज मैं हबीब यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मुझे आगे इसको लेके जाना है, उसका नाम है समथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज मुझे खुद फील हुआ है पर्सनल डेवलपमेंट हबीब यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद. बिकॉज आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होती, आपके 1000 लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ रहे हैं जॉब मार्केट में कि हमें जॉब देते हैं, राइट. आपको क्यों लगता है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे, राइट. यू नीड टू हैव दैट स्पार्क, एक डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि वो आपको पिक करें कि हाँ ठीक है, वी वांट दिस पर्सन टू कम एंड वर्क इन आवर कंपनी. सो आई फेल्ट लाइक हबीब यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन मी दैट. इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल जर्नी, आई फील कि जो मुझे बहुत ऑब्स्टिकल फेस हुआ था वो पहली दफ़ा हुआ था जब मैंने फर्स्ट में अपनी जॉब शुरू की थी. दैट वाज इन टोयोटा. तो एक फैक्ट्री है जहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे गाड़ियाँ आपकी जो है लड़कियाँ बना रही होंगी. तो यही था, मेजॉरिटी वहाँ पे लड़के थे, ठीक है. एंड देवर वो अपनी आई नो अपनी 100% लगा रहे थे, बट क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा था जहाँ पे उनकी कभी कोई लड़कियों से इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो कभी मैं जाके अगर उनसे कोई सवाल पूछती थी बीइंग अ क्वालिटी इंजीनियर, तो मुझे कभी सही से जवाब ही नहीं दे पा रहे होते थे वो लोग, क्योंकि वो खुद हेजिटेट होते थे कि अच्छा हम एक लड़की से कैसे बात करें हम. तो ये ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फेस हुई वहाँ पे जाके. एंड आई फेल्ट लाइक उनकी गलती नहीं थी ऑब्वियसली, बिकॉज उनका बैकग्राउंड ऐसे इट वाज वेरी नैरो, राइट. उनको सिर्फ इंटरेक्शन सिर्फ लड़कों से हुई है, कभी कोई लड़कियों से नहीं इंटरेक्शन नहीं की, कभी रिपोर्ट ही नहीं किया एक लड़की को, कभी कोई जवाबदेह नहीं थे एक लड़की को. तो उनको वो उस चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता था मुझसे कम्युनिकेट करने में. तो ऐसे तो मुझे बहुत फील हुआ कि मेरी जॉब खुद, मेरी परफॉर्मेंस खुद हिट हो रही थी इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आगे अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी. सो आई फेल्ट लाइक मैंने कमिंग टू दैट हाउ आई काउंटर दैट वाज, मैंने जो है आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू जस्ट हैव कम्युनिकेशन विद देम. लाइक मैं जाती थी, मैं उनसे काम की बात नहीं करती थी, मैं उनसे नॉर्मल पहले बात करती थी कि ठीक है आप लोग कैसे हैं, आप लोग का दिन कैसे जा रहा है. एंड वंस आई गॉट कंफर्टेबल ओनली देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम कि अच्छा सही है, मुझे बता दें ये प्रॉब्लम क्यों आया था या आपने इस प्रॉब्लम को कैसे केटर किया. सो आई फील लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, राइट. आपको बैकग्राउंड आपकी हबीब यूनिवर्सिटी, आपको कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी से जो आपकी बैकग्राउंड आपको मिलता है, you bring that and you put it in your life and you actually try to become a better person day by day, and that's what I'm trying to do as well. Thank you. Okay, that's very interesting. Anumtah, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने जिस कंपनी में काम किया ये पाकिस्तान में थी? Yeah, it's a Toyota Indus Motor Company. यहाँ कराची में? It's a port casting plant. Okay, yeah. good. तो यहाँ हमें पता चलता है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, जो हम हबीब यूनिवर्सिटी में जिन पे स्पेशल एम्फेसिस करते हैं. ओवर टू फरीहा.
I think my obstacles are not very different from all these women, but one thing that has helped me through all those obstacles is definitely a very strong support system. I remember जब मैंने पहली बार सर्किट की क्लास ली थी और हमारी लैब हो रही थी और हमें एक छोटा सा सर्किट बनाना था, मुझसे वो नहीं बन रहा था, and I was like मैं किधर आ गई हूँ, मैं I am not made for this. And it was my professor who made me realize that one circuit is not a definition of you defining that you're made for this or you're not made for this. There are a lot of people who are struggling, but not everyone is asking for help because not everyone had that, confidence to go out and ask for help कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती है. Throughout the university, our batch had a very, bad balance of women and male in our year. So one thing that our professors made sure कि there should be equal opportunity. एक बात है, and I think that has always stuck by me, is there was this quote that for the world I would always be a female engineer. हमेशा आप इंजीनियर हैं, ये एक फीमेल इंजीनियर है. तो ये बायस सिर्फ आपका एक सपोर्ट सिस्टम ब्रेक कर सकता है. एंड मेन हैव टू इंटरवीन इन दिस. देयर इज़ नो वे बिकॉज वी नो देयर हैज़ बिन अ मेल डोमिनेंस अराउंड दिस फील्ड. तो अगर आपके पास मेल एलाइज नहीं होंगे हु आर गोना हेल्प यू थ्रू दिस, हु आर नॉट गोना बी योर सपोर्ट सिस्टम, तो यू वोंट बी एबल टू नेविगेट थ्रू दीज अलोन. हम अकेले शायद झंडा लेकर नहीं चल सकते unless and until we don't have strong male allies who are walking behind us and making sure that we're there in the limelight. So during university, my professors were that support system for me. And honestly, even today, if there's any good development in my career life or my personal life, I go to these one or two professors and they always make sure to keep me grounded. They're like, Fariha, paun zameen se nahi uthne chahiye. And that has, stuck by me. When I entered my career, I joined House of Habib. So House of Habib has multiple plants that we have to go to and do projects there. मेरा सबसे पहला प्लांट था, वहाँ पे गाड़ियों की वायर्स बनती हैं. तो उस प्लांट पे जब मैं उतरती थी तो मुझे एकदम से ऐसा लगता था पूरी ऑडियंस मुड़ गई है, क्योंकि उस प्लांट पे लोगों को आदत ही नहीं थी. So it was my manager who made sure that I don't feel someone who doesn't belong there. I am there because I deserve to be there. And he had to make that space for me, and he did. Similarly, when I entered my another career opportunity, we had strong people, strong female leaders in our people department who made sure that every single woman who was entering Bazaar, be it as an engineer, be it in the business department, be it in the product department, they made sure that they feel they belong there. They are there because they deserve to be there, not because किसी ने आके बस बोला है क्योंकि हमें अपनी डाइवर्सिटी बेहतर करनी है तो चलें औरत को हम नौकरी पे रख लेते हैं. It's not that. And it's very, हम I think inbuilt है हमारा imposter syndrome कि हमें जहाँ पे भी लगता है कि अच्छा हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें लगता है पता नहीं हम शायद इसके काबिल नहीं है, लेकिन बस हमारे लिए बस अच्छा हुआ जा रहा है. So that strong support system has helped me navigate through all of those obstacles, and I think I owe it to a lot of these people today. Fariha, this is true that if you don't have a valuable system, like जैसे आपने कहा कि professors आपको बहुत support करते हैं. I have gone through private universities, and I have also worked in government university, and in my experience it was a very blanket statement कि अगर आप female हैं और आपसे ये course clear नहीं हुआ तो please आप arts में चली जाएं, आपसे ये नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है. And they were very clear about it, and they will not give you support unless and until you would show that you are better than the rest of the group. So Habib University इस ज़मन में काफ़ी support provide करता है. Binish? Right. So I think for me Habib University was like, obviously as all of them said, कि बहुत एक अच्छा support system था. तो मेरे लिए भी था. मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ या मैं गलत जगह पे आ गई. अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लास में I used to match everybody else's level. Then even the place I'm working at right now, they have a very good environment. तो मुझे उसमें भी कभी ऐसा फील नहीं होता. In fact there's like बिल्कुल हबीब जैसा माहौल, and I'm very thankful for it. An obstacle that I faced in my journey was in the very early years. और अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है. So it was like when I came in my 8th grade, हमारी मैथ्स की एक नई टीचर आई थी. And then even though she was a female herself और वो मैथ्स पढ़ाती थी, उनको लगता था कि girls are not intelligent, लड़कियाँ intelligent हो ही नहीं सकती. तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी, and I was surprisingly better than the rest of the class. तो even though मेरे मैथ्स में हमेशा फुल मार्क्स आते थे, she would never appreciate me. In fact वो मुझे ये बोलती थी कि you are not an intelligent student, आप बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं.
اور مجھے اس پہ ہنسی آنے کے بجائے مجھے اس پہ بہت غصہ آتا تھا کیونکہ میں نہیں کرتی تھی. آئی ووڈ بی لائک کہ میں ان کو کیسے پروو کروں کہ میں نہیں کرتی پریکٹس. میں مطلب بیکاز اٹ فیلٹ بیڈ کہ وہ مجھے ہر وقت کلاس میں یہی بولتی رہتی تھی انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ می. تو اینڈ آئی واز ویری ینگ, آئی ڈونٹ نو, آئی واز 13-14 ایٹ دیٹ ٹائم. آئی یوز ٹو بی لائک کہ یار یہ کیا, یہ مجھے کیوں بولتی رہتی ہیں, اینڈ شی از اے فیمیل ہر سیلف. دیٹس واٹ سرپرائز می دا موسٹ. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان مائی لائف اینڈ ایون ان اے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ انہوں نے میری امی کو یہ بولا. اینڈ دین سرپرائزنگلی میری امی نے یہ ان کو ڈینائی بھی نہیں کیا. تو میں نے ان کو گھر جا کے بولا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ میری بچی پریکٹس نہیں کرتی, اس کے ویسے ہی اچھے مارکس آتے ہیں. اینڈ دین مائی مدر واز لائک آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین ہر دیٹ. ٹھیک ہے, تو اس وقت آئی واز لائک کہ میں کیا کروں. تو پھر آئی ٹیکل دس آبسٹیکل ان اگین اے ویری فنی وے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10th کلاس میں صرف 2 سبجیکٹس کے ایگزامس دیتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات, اور باقی ہم سارے ایگزامس 11th میں دیتے ہیں. تو 10th کلاس میں میں نے پاکستان اسٹڈیز, اسلامیات اور خود سے پڑھ کے ایڈ میتھس بھی دے دیا. میں نے اسکول سے رجسٹریشن کرائی بٹ آئی گیو ایڈ میتھس. آئی ڈڈ ناٹ گیو میتھس بٹ آئی گیو ایڈ میتھس وچ از لائک لیٹس سے 1 اسٹیپ اہیڈ آف میتھس. تو جب میں نے ایڈ میتھس بھی دے دیا اینڈ وین آئی وینٹ ٹو 11th تو میرا رزلٹ آیا, اور میرا رزلٹ اچھا آیا اس میں. اینڈ دین دا پرنسپل سیٹ کہ اب آپ کو میتھس کی کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سال. تو پھر میں نے اگلے سال میتھس بھی خود سے پڑھا. تو آئی فیلٹ سچ اے وکٹری کہ مجھے میتھس کی کلاس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹیچر اچھی نہیں لگتی. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ آئی ٹیکلڈ مائی آبسٹیکل وچ از ویری فنی. لیکن اس وقت وہ بہت سیریس لگتا تھا. نہیں بنش, یو ہیڈ بین ویری لکی بیکاز موسٹ آف دا گرلز ڈو ناٹ ہیو دا کریج ٹو اسٹیپ فارورڈ فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈ if it is not internally integrated nicely. Yes. So we are very lucky to have you here. Thank you. Haleema, over to you. اوکے, اچھا یہ جرنی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس طرح سے کہ میں اور میری ٹوئن بہن ہم دونوں بالکل ایک ساتھ ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی بھی اکٹھے کی, بالکل آخری اسٹیج تک ہم اکٹھے تھے. اب ہم الگ ہو گئے لیکن ابھی تک ہم اکٹھے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے دماغ میں بچپن سے نا ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے اور وہ لوگوں نے ہی بلڈ کیا ہوتا ہے. ویمن کین ناٹ ایکسیل ان انجینئرنگ, اور اگر آپ لائق ہیں تو آپ ڈاکٹر بنیں گے. اچھا, جب ایف ایس سی کا رزلٹ آیا تو میرے والد صاحب کو کچھ لوگ مبارک دینے آئے کہ آپ کے بچوں نے ماشاء اللہ ٹاپ کیا ہے, دونوں بیٹیوں نے, تو اس ملک کو 2 بہت اچھے ڈاکٹر ملنے والے ہیں. تو مائی فادر واز لائک ہاں مے بی پی ایچ ڈی ڈاکٹرز. تو نہیں پی ایچ ڈی نہیں, پی ایچ ڈی کون کرتا ہے, آپ ان کو میڈیسن میں نہیں ڈالنے لگے. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. تو وہ جو ان کے چہرے پہ, لوگوں کے چہرے پہ ایکسائٹمنٹ دکھ میں بدلتی تھی نا, وہ میرے دماغ میں مطلب رچ بس چکی ہے. تو میں نے اس وقت ہی, ایف ایس سی کا بچہ مطلب آج سے 11 سال پرانی بات ہے, وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا, اس کو اتنا دور کی نہیں دکھ رہی ہوتی. وہ کہتا ہے یار بس اب نا اور محنت کرنی ہے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اپنے والد کا سر ایسے بلند کرنا ہے کہ یہ سب دیکھتے رہ جائیں. اور اس کے بعد سچ بتاؤں تو یونیورسٹی کے پہلے 4 سال سب سے مشکل تھے, کیونکہ وہاں میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھی ہوں. وہاں پہ حبیب یونیورسٹی کی طرح آپ کو اتنا انکریجنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا, ان ویلکمنگ ہوتا ہے, یہ بات سچ ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. تو وہ پہلا اسٹیپ اتنا مشکل تھا, اور اس کے بعد اتنی آسانیاں تھیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے اٹلی میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, جہاں جہاں میں گئی اتنی آسانیاں تھیں. آپ اپنے بچوں کا ساتھ دیں, پہلا قدم ان کے ساتھ رہیں, اور ہر آپشن ایکسپلور کریں, پبلک سیکٹر ہو, پرائیویٹ ہو. پرائیویٹ میں حبیب یونیورسٹی میں اتنے اسکالرشپس ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بس اس آبسٹیکل کو اوور کم کرنے کی سوچیں, اور آبسٹیکل سے دب کے نہ بیٹھ جائیں. تھینک یو. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اس سیشن کے ذریعے میں آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ جان رہی ہوں, یہ میرے لیے کافی انفارمیٹیو ہے. ہماری آبادی کا 50% خواتین پر ہے. اگر ہم دیکھیں ورک فورس میں تو یہ بہت کم ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اسٹیم فیلڈ میں جو نمبر میرے پاس ہے, اٹ از 28% آف دا اسٹیم جابس are dedicated to women now which are currently being occupied. اتنی ہیوج ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, لیکن اس میں ہمارے پاس خواتین اویلیبل نہیں ہیں, آتی نہیں ہیں. سائنسز میں, ٹیکنالوجی میں, انجینئرنگ میں, میتھمیٹکس میں, دے آر ناٹ انکریجڈ. سو اب میرے اپنے پینلسٹ سے, قابل پینلسٹ سے سوال ہے کہ جب آپ نے اپنا سفر شروع کیا اس وقت لڑکیوں کا کیا پروپورشن تھا, اور اس وقت ان کا کیا رجحان ہے, کیا اس میں کوئی امپروومنٹ آئی ہے یا اسٹل اٹ از دا سیم؟
Arisha. So when I started at Habib in my batch, which was I think quite good, ke 1 to 3 relatively better ratio tha. I mean there were 20 boys in my class and like I think around 10 if I round off the figure, 10 girls, which was not bad. Then the following batch 2019 from which Fariha is from, there were only 2 girls in the entire engineering school. Oh. So It went down. yeah, it did went. I mean, for their batch, definitely it did went down. फिर उसके बाद जब when I went on for at my job at K Electric, तब भी I mean primarily that entire company is run by engineers, right? So you would expect some diverse ratio over there, but I think मेरे पूरे floor में सिर्फ 3 engineer ख़वातीन थीं as compared to I think against 30 something male. And the ratio was similar in America as well, where I worked at a lab. So I think we were two engineer girls and against I think 10 or something boys, and our professors were all male as well. But now when I came back to Habib, now I'm teaching at Habib. I'm teaching juniors, the third year students of electrical engineering. The ratio in my class is 1 to 1. That is, half of my class is of girls and half of boys, which is I think a quite remarkable journey, achievement that I would say. And I would also say कि I mean अगर इसकी कोशिश नहीं की गई होती तो शायद ये achieve करना इतना आसान नहीं होता. So I feel like that progress in itself is a remarkable achievement, and I hope that this will only go forward. जैसे पहले medicine के लिए famous होता था कि medicine department में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, तो inshallah in near future engineering school में भी यही हाल हो. Okay, let's hope for that. Swaleha. Yes, so I think that in terms of my university education, I think that as compared to electrical engineering or mathematics heavy subjects, computer science had more girls, but the overall gender ratio was still very unequal. But when I went to job market, I realized that there is some sort of improvement, in the sense that in my product team, जो मेरी team है उसमें there is an equal ratio of men and women. But there is one still thing that really bothers me, is that all the women in my team are at junior levels or are at mid levels. But leadership team में अगर आप देखें, senior level पे अगर आप देखें, they are all men. So I think that as a society, though we are making good progress in terms of promoting women at workplaces and promoting women in engineering, but we are still a long way to go where we actually see women in leadership positions and we actually see women driving the force behind them. So yeah, I think we are making good progress, but we still have a long way to go. Great, great. Anumtah, आप बता सकते हैं comparison, because you have worked in the field as well. Yeah. So surprising enough, I had this debate with a few of my friends yesterday only about equality and equity. So right now we're in more need of equity versus equality. So for those you who do not know the difference between equal and equity, I'll explain it a little bit. So for example, this is a very, very famous example going all over social media, so I'm pretty sure a lot of you would be aware of it. So for example, there's a view, let's say this high, and there are 2 people, one of them whose height is this, and another one of them whose height is this much. So if you give them both an equal amount of increment in height, let's say of a stool, that would be equality, but not equity. So you need to give them both the amount of upliftment, so that they both have the equal opportunities then. So I believe now people are getting more aware of these things, and in the job market, as I would say, when I was hired in my first job, there were only 3 girls in the batch of 10. So it was 3 on 10. But now I see that the job market is also getting very aware of these things. And now a lot of companies are only hiring female to try to cope up with that gap. So I'm sure there's a long way to go, but they're trying to get there. So I feel there is a difference. People are getting aware of this, but there's still a long way to go. Yeah, thank you. Okay, thank you so much. I have been informed that we need to wrap up in 5 minutes. So I'm really sorry, I have to cut you short. So on our final note, would you like to give some advice to young girls and their parents here in the audience?
सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हलीमा. हम आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि उधर से हम रह गए थे. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ पेरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लड़कियाँ भी, गर्ल्स भी. मेरी ये एडवाइस होगी, प्लीज़ आप लोगों को मत डिक्टेट करने दें कि आप कितनी काबिल हैं. आप बहुत काबिल हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं. ये स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं और मैं चूँकि पढ़ाती हूँ अब हबीब यूनिवर्सिटी में, मुझे 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली बता सकती हूँ कि मेरी क्लास के हाईएस्ट अचीवर्स भी लड़कियाँ हैं, ये एक हैं उनमें से, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी लड़कियाँ हैं और मुझे उनका फ्यूचर सबसे ब्राइट दिखता है. तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का साथ दें. हबीब यूनिवर्सिटी में बेशक वो लोग आएँ, देखें, उस एनवायरनमेंट को देख के उसको छोड़ना नामुमकिन हो जाएगा. और इतनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी वाला मसला ख़त्म हो जाएगा. शुक्रिया जी, थैंक यू. हबीब यूनिवर्सिटी में तकरीबन 85% ऑफ द स्टूडेंट बॉडी इज़ ऑन सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप मेरिट पर आती हैं, तो आप फुल 100% स्कॉलरशिप भी अचीव कर सकते हैं. ओके, सो बिनिश. राइट. सो माई एडवाइस वुड बी जस्ट के डू वॉट योर हार्ट सेज. अगर आप मैथ्स में, साइंसेज में अच्छे हैं, आपको मज़ा आता है, आपको शौक़ है, डू नॉट लेट पीपल टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए. और माई एडवाइस टू पेरेंट्स इज़ कि आप अपनी बेटियों के सपोर्ट सिस्टम बने. आप उन पर ट्रस्ट करें तो फिर वो आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ेंगी. अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे देन उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किसी तरीके से छुप के वो काम करें. बट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन ऑलवेज. सो या, थैंक यू. फरीहा. I think one thing that I realized after I entered the professional field, अगर हम बोलते हैं कि इस दुनिया में 50-50% का रेशो है in terms of male and female, imagine if men were designing, or like the male population were designing solutions that were only catering to one sort of the gender. That means कि आप 50% population का point of view बिल्कुल discount कर देंगे when you're finding solutions to certain problems. And this is why it's important for us to have equal representation of both the genders wherever it is, be it, you know, universities हो, पढ़ाई हो, career हो, कहीं पे भी हो. Because अगर women would not step up and tell their story, because their stories are worth speaking about, and if they're not going to take that space, then we would be ending up with solution that would be catering to just a male opinion, and that's it. Okay, thank you, thank you. Okay, Anumtah. We'll keep it short. Yeah, I think just do what your heart tells you, follow it, and have faith, and just do what you want, and you will succeed in life. And just have that hope. There will be problems, ऊपर नीचे होता है ज़िंदगी में. There will be difficulties. Just keep hope and follow what your heart tells you. That's it. Thank you. Thank you. Yes. I just have one small piece of advice. I think all through my journey, what really helped me was having some sort of a female role model to look up to, which really helped me design my own journey. So for all the girls here, I think I would advise you to have some sort of a female mentor or some female figure to look up to, and that would really help you in your journey. And I myself am open to mentoring any of you who is interested, so please feel free to reach out to me after this session. Brilliant, brilliant. Okay, Arisha. I think it's a myth कि लड़कियों से engineering नहीं होती है. And like from my batch as well, the gold medalist or the best capstone award all went to the girls. And if you're into it, engineering, if you like engineering, then go for it. And there are lots of scholarship as well. I mean, I primarily did not pay anything to Habib University. On the contrary, they invested in me. They sent me to abroad on their own money. So I mean, again, that's also a myth that Habib University is very expensive. They have loads of scholarships, so if you're interested, please do go for it. At least once go visit there, see it for yourself, and then decide what to do and what not to do. But give it a go, okay? With that, with those inspirational stories and pieces of valuable advices for our youth, we would like to close this session. Thank you very much for your presence. We don't have time for questions, do we? Okay, so the floor is open for questions, please. You can ask questions to the panelists. मेरा नाम रेहान शाह है जी. इन सब जो इंजीनियर हैं इनको सलाम पेश करता हूँ. बहुत शुक्रिया. तो मैं सवाल यानी कि सवाल करने की वजह भी है, सवाल पूछने की भी वजह है.
जैसा कि मुल्क के हालात चल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भाई ये इंजीनियर जो इस मुल्क में पढ़े लिखे और अक्सर हमें कहते हैं कि दुआ करो कि भाई मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, मेरा फ्यूचर बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि रियासत हमारी जो है वो कहती है कि अब रियासत जो है ना नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है ना कोई इदारा नहीं चलाएंगे, वो बड़े बड़े इदारों को बंद कर रही है। वो कह रही सिर्फ ज़मीन चाहिए हमें, अब इदारा नहीं चाहिए, तो इसीलिए माइग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ से ज़्यादातर पढ़ते यहाँ हैं, वहाँ से मेडिकल करने यहाँ आते, लेकिन वो चले जाते। ऐसा तो नहीं होगा सर। तो इनमें से बहुत सारे जो बाहर से पढ़कर आए हैं और मैं भी बाहर से पढ़कर आई हूँ। आई थिंक हलीमा बाहर से आई हैं, हमारे फुल ब्राइट स्कॉलर्स हैं जो बाहर से यहाँ आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब तो यहाँ मौजूद है स्टेज पर। अच्छा, मैं जी, ये वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि हबीब यूनिवर्सिटी हुई या और भी प्राइवेट सेक्टर्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे के सैलाब आ रहे हैं या इस तरह के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो आप लोग इतने सारे जो प्रोग्राम्स निकाल रहे हैं उसमें कोई आपने इस तरह का प्रोग्राम निकाला है अपने पास कि इन बच्चों को ये ट्रेनिंग भी मिले कि अगर खुदा ना करे ये इस तरह के किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो ये अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हबीब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट क्लब्स हैं और डिफरेंट क्लब्स के स्टूडेंट्स मेंबर्स हैं और वो इस सैलाब के हालात में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोनेशंस को जमा करना, स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ जाकर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, इस पर और काम करना चाहिए स्ट्रक्चरली। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स के क्लब्स हैं उसके थ्रू ये काम किया जा रहा है। एज अ कोर्स आई एम नॉट श्योर कि हम इसे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए शायद हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है आपका। I think with that we close our session formally. Thank you very much everyone. Thank you very much panelists for the wonderful Thank you Dr. Sameena Shah Zaman. Wonderful session, women in STEM. Thank you the panelists. Lovely. Thank you.